Rahim. Assalamu alaikum students. Our third organ system which we have to discuss today is human respiratory system. Chapter 1, cells, tissues and organs. So student, I have drawn the respiratory system. It consists of three main organs: trachea, lungs and bronchi. Trachea, also known as windpipe, जिसे हम कहेंगे सांस की नाली. It transfers the air, transfers the oxygen and gases from oral cavity or nostrils to lungs and from lungs to nostrils. नोस्ट्रल से लंग्स एंड लंग से नोस्ट्रल तक जो गैसेस की ट्रांसफर है वो किस पाइप के थ्रू होती है? ट्रैकिया, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. सेकेंड वन इज bronchi. Trachea divides into two small tubes. One tube enter into one lung and second tube enter into the second lung. These tubes are known as bronchi. Bronchi transfers the oxygen or gases from trachea to lungs and lungs to trachea. Small tubes, subdivision of किसकी subdivisions होती हैं? Trachea. Lungs is the main respiratory organ where exchange of gases takes place. Exchange of gases यानी कि जो गैसेस का ट्रांसफ़र है, तबादला है हमारे खून से लंग्स के अंदर और हमारे लंग्स से खून के अंदर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये मेनली कहाँ पे होता है? लंग्स के अंदर. सो दिस इज द ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम in which we discussed its three main organs and their relative functions. So overall function of respiratory system is respiratory system puts oxygen into the blood and removes कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड. ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को एंटर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसे निज़ाम तनफ़ुस भी कहते हैं. सो योर असाइनमेंट is to draw the structure of our respiratory system and then label it. So this is all about human respiratory. Our fourth organ system is human nervous system. Human nervous system consists of three organs: brain, spinal cord
and nerves. Mainly it consists of two organs, brain and spinal cord. Nerves are the projections of spinal cord, bundle of neurons. We will discuss it later. Brain, the main controlling center, main control center of nervous system, and it is located in skull. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्कल में. और मेन जो कमांड सेंटर है जो बॉडीज के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, दैट इज ब्रेन, हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड इज लोकेटेड इन बैकबोन और वर्टिब्री. कहाँ पे लोकेट की होती है? बैकबोन और वर्टिब्री. एंड its function is to develop a connection between the whole body and the brain. पूरी बॉडी और ब्रेन के दरमियान में जो कनेक्शन डेवलप करता है वो ये लॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड करती है. थर्ड वन इज नर्व्स. नर्व्स आर द बंडल ऑफ न्यूरॉन्स. बंडल ऑफ neurons, and their function is to develop the communication or connection between the whole body and the brain. So these are the three main parts of nervous system. Brain, highly developed command center situated or located in the skull. Spinal cord present in the backbone and develop a connection. Nerves, bundle of neurons, न्यूरॉन सेल्स के बंडल होते हैं, and their function is to convey the message towards the body and from body to the brain. So overall function of nervous system, it controls the functioning of body. So this is all about today's lecture, in which we discuss the detailed structure of nervous system and its function. Your assignment is draw the diagram of brain and spinal cord and those nerves which are projected from this system. So this is all about our today's lecture, in which we discussed two organ systems: human digestive system, human respiratory system, and human nervous system. So this is all about today's lecture.